Hello everyone, I am Dr. KG Arora. Today we are going to discuss the concept of value of output and value added. This is a part of nation income and related aggregates of introductory macroeconomics. So let us start with meaning of value of output and how it is estimated. Firstly, we understand what is value of output. A firm or any sector producing various goods and services in a given period of time. If we take the market value or money value of all goods and services produced by that firm or that sector, that will give you the value of output. Now the question is how this value of output is estimated. This value of output can be estimated in two ways. The first method is price multiplied by quantity produced. For example, a firm is producing 1000 units at a price of rupees 10, then its resultant will give you the value of output that is 10,000. That is price multiplied by quantity produced. And second method is by adding sales and change in stock. We can also get the value of output. Sale means sale of that firm or that sector. There is no problem. But you have to understand the concept of change in stock. Change in stock is the difference between closing stock and opening stock. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाती हैं दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक but it also includes the unsold stock of the previous year that is called opening stock. So when we will subtract the amount of opening stock that is unsold stock of the previous year from the closing stock, we will get the value of unsold stock of current year. So when we will add the unsold stock of current year that is change in stock in amount of sale, we can get the value of output. Why we are putting here plus and minus sign? Now there is a possibility that closing stock may be greater than opening stock. जो इस साल के लास्ट में बचा है वो ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, यानी कि जो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक पिछले साल का था उससे ज्यादा हमारे पास करंट ईयर में बच गया. It means it will experience an increase in stock, and this will be represented by plus sign, that is increase in stock. Another possibility is that there may be a opening stock which may be greater than closing stock. It means there will be a decrease in stock. This will be represented by negative sign. Therefore, I am putting plus sign as well as minus sign. By adding sales plus minus change in stock, that will give you the value of output. Now this sales we can also calculate in two ways. The first one is price multiplied by quantity sold. ये याद रखना है आपको कि quantity sold multiplied by price will give you the amount of sale, but quantity produced multiplied by price, that will give you the value of output. Second method is domestic sales plus exports. That will also give you the amount of sale. Domestic sales means when we are selling our goods and services within our country. That is
our resident are purchasing this goods and services, that is domestic sale. But the same goods we can sell to the non-resident, that means we are exporting that goods and services to other country or to the non-residents, that represented by exports. By adding domestic sale and export, this will also give you the amount of sale. In this way, we can calculate the amount of value of output. अब हमें ये समझना है आपको लिखना कैसे है, कैसे प्रेजेंट करना है. लेट अस मूव दैट पार्ट. Market value of all goods and services produced by a firm or a sector during an accounting year will give you the value of output. The first method is value of output is equals to price multiplied by quantity produced. Now the second method is sales plus minus change in stock. This is the difference between closing stock and opening stock. And sales you can estimate by adding domestic sales plus exports or price multiplied by quantity sold. Closing stock also contains the opening stock of previous year. So when we will subtract the amount of unsold stock of the previous year, that is opening stock, we will get the change in stock, and that represents unsold stock of current year. When we will add the amount of unsold stock in of current year in sales, then we will get the value of output. Now there may be a two possibility which I have already explained to you. That means closing stock may be greater than opening stock. That means that will be a increase in stock, and that will represented by plus sign. When opening stock will be greater than closing stock, then that will be a decrease in stock, and that will be represented by minus sign. So by adding all these, we can get the value of output. Sales we can calculate by multiplying price and quantity sold, or domestic sales plus exports. Now we are coming to the next important topic, that is value added. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप सपोज कीजिए यू आर प्लानिंग टू मेक ए पेन. अब आप पेन के लिए क्या खरीदेंगे? आप पेन के लिए खरीदेंगे प्लास्टिक एंड सम अदर इनपुट्स. मैं अपने इस एग्जाम्पल को सिंपल करने के लिए आई एम टेकिंग ओनली वन एग्जाम्पल, सॉरी वन इंटरमीडिएट गुड, दैट इज प्लास्टिक. अब इस प्लास्टिक की कॉस्ट मान लीजिएगा 100 रुपीज है, एंड दिस इज योर इंटरमीडिएट गुड फॉर मेकिंग ए पेन. अब अगर मुझे इस प्लास्टिक को पेन में कन्वर्ट करना है, तो आई विल एड the services of four factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur, and other inputs. अब उसमें मान लीजिएगा कि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट करेगी एंड सो ऑन. नाउ दिस प्लास्टिक विल बी कन्वर्टेड इनटू पेन. दिस विल बी योर आउटपुट. अब इस आउटपुट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, जैसा मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया है, मान लीजिएगा कि ये 500 आ जाती है. अब आपने क्या किया, इस 100 में इन सब सर्विसेज को ऐड किया एंड अदर इनपुट्स, तो उसको मैंने कह दिया वैल्यू एडेड. दिस वैल्यू एडेड इज नथिंग दैट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय यू इन प्लास्टिक टू कन्वर्ट द पेन, एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड. अगर आप इस वैल्यू एडेड को निकालना चाहें, तो आप क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू, अब मैं इस प्लास्टिक की वैल्यू को इसमें से और जो दूसरे इनपुट्स हैं मैं इसमें से अगर माइनस कर दूं, तो आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगा.
और इस वैल्यू एडिड को हम टेक्निकली कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पर ही आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल रही है। तो दिस विल गिव यू द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ value added by subtracting the amount of intermediate consumption, that is expenditure on raw material, from value of output। अब इसको इसको भी समझ लेते हैं कि इसको कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग प्लास्टिक फॉर ₹100। आप इसमें हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और बाकी सब इनपुट्स मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। वी आर एडिंग, यानी कि हम इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इसमें इससे पेन बन जाएगा एंड दैट इज रुपीज सपोज 500। अब इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट आपकी बैठी ₹100 और इसमें हमने ₹400 की फैक्टर सर्विसेज और कुछ टैक्सेस को हमने ऐड कर रखा है इसमें, एंड दैट विल गिव यू, दैट इज गिव यू वैल्यू एडेड एंड दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर आपको वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है, then you have to subtract the amount of intermediate cost from value of output, then you will get the value added. This value added is the contribution made by the producer of pen in plastic। तो अब हम इसका क्या कंसेप्ट आएगा, वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट एट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, and technically it is known as gross value added at market price।